Okay, everyone. As I came to know that there is a class of Shansar like for science also till 11. So I was waiting for you all to, freshen up and join the class. That's why I said 11:10, and that's why I didn't start the class. So just 2 to 3 minutes more and then we will be starting the class. So please wait. Good morning, all of you. So wait till everybody joins us. I hope you're comfortable with this. I haven't started the class, so you don't need to worry. I'll be starting soon, and maybe some range issues, so you get those buffering part. I hope they join it quickly. I've sent the link in both the places, group as well as Google Class. So still, I think students are confused to join. Just a minute, I'll just use it and give them some. Okay, fine. I will be starting. I think very less number of students today. Good morning, you all. Today we will be starting on a new topic. Okay. Before starting the topic, I have
some, introspection for you, because I can't go on questioning you. It's very difficult for you to copy. So I just request you to think on the points what I'm saying. Good morning once I have repeatedly for all. Now stop typing and pay attention to the question. Yeah, that's okay with the number of children. I don't bother, because from my side it's quite clear. I don't know what is the confusion for them to join it, because I've forwarded the link to Google Class as well as to our WhatsApp group. And still, within 2 months, people have changed the phone numbers, and they go on changing, so they are not able to get the link. I know it's an issue, so it's okay. I think they can come watch it later. So I'll stop with the other communication with them, and I don't know, something is wrong with their link part also. I hope when you all are here, that means obviously the link is working. I don't know what's the issue. Fine. So we will be starting with the new chapter, that is class 6, chapter number 3, which deals with the numbers itself. Okay. So we will be focusing again on the numbers, as your chapter 1 was, revision of numbers, basic operation on numbers, which you learned it in class 5. Your second chapter was based on whole numbers and its properties, and I hope you learned it well. Okay, and now this more about numbers, and we are talking different types of numbers. Okay, child, I've told you that no need to copy and go on typing your names, everything here, because I won't be able to recollect, because my focus is on teaching you. So I won't be focusing on your names and all again. So you all, yeah, from I take it as wishes from my side that you wish me thanks, but now you focus on, as you join it, you focus on your classwork, like what I'm teaching. Okay, so here we start with the basic and the more about the numbers. Still, we will be dealing with the numbers only. We are not going with any different concept with the numbers. So if I go with your lower classes concept, okay, that will give you the hint for joining about different numbers. Okay, so let's begin. Let's start with it. When we talk about these numbers, 23, 127, okay, could you discriminate this number? ये जो यहाँ पे 3 numbers है, तो are they different? Could you tell me, please? Could you tell me what are these numbers? How will you discriminate them? Yes, sir. हेलो बेटा, मेरी क्लास चल रही है, आप लोग लिंक से ज्वाइन करिए, ग्रुप में ज्वाइन करिए प्लीज, ग्रुप में से ज्वाइन करिए। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? ज्वाइन प्लीज, अभी कॉल मत करिए। Did you get my question? Okay, we were talking about I just begin again. I'm really sorry for the disturbance today. There is some issue with the network from the children's side, and they are more confused. So let's begin. Okay. There are 24 students joined here. So wish you all good morning here. And we are talking about numbers here. Okay. Some more properties and some more knowledge about numbers. Okay. So let's start there. I have given you a few numbers here. Okay. How will you discriminate these numbers as? Okay. One thing is, for example, 23, 127, and 426. So one thing is, you could say, as per knowledge, that is a 2-digit number and these are 3-digit numbers. Okay, this is the one way, like 2-digit and 3-digit numbers. Is there any other way you can describe this number? I hope you're getting me. I hope you're able to listen to me. So could you describe this number? Can you classify them in 2 different categories? I'll give you a hint. Okay, looking at the last place, you used to discriminate the numbers. Can you type the answer and tell me what is it? Yes, children. I hope my question is clear to you. So look at using this. Okay, if I go with
These numbers. So what do you call them as? Looking at the places, how will you decide the numbers as? Okay, look at the places and you divide them into two categories, even or odd numbers. Did you remember this? You have done this classification in your lower classes. What was it? Even numbers and odd numbers. So what are the even numbers and odd numbers? Okay, this basic information is required to us to start with the numbers. So one of the basic concept is even and odd numbers. Okay, all of you are familiar with that. The last place of the number is 0, 2, 4, 6 or 8. Okay, the ones place or the last place or the units place, whatever word you use it. If it is 0, 2, 4, 6, 8, you call those numbers as even numbers. And if the unit place of the number is 1, 3, 5, 7 or 9, we call those numbers as odd numbers. Do you recollect this? Okay, so this is your first point. Then again, I'm going back to your lower classes and revising few concepts. Do you remember division? You learned two different concepts, division and multiplication. That's more of I'm going to discuss here about I'm discussing about these two concepts and basically your tables, isn't it? You all are familiar with tables. You all learn the tables well. Okay. So here the question is about division and multiplication. Then are you familiar with division and multiplication? So yes, you have been doing this with class 2, 3, 4, right? 5. So these are the numbers with division and multiplication. So you are familiar with these two concepts. Okay, so I hope this is clear to you. We go with this concept. Now, what are these concepts? If suppose I write 2 5s are 10. I'm taking the simplest table, isn't it? 2 5s are 10. Okay, so here I can say this in a statement run. थोड़ा सा ध्यान देना, please थोड़ा सा ध्यान देना. 2 5s are 10. मतलब कि 2 multiplied by 5 is equal to 10. This is the one way I can describe the statement. Secondly, I can say product of 2 and 5 is 10. Right? So you agree with me? And I can say that one more from this statement you understand that if you divide 10 by 2, you will get 5, or if you divide 10 by 5, you get 2. Do you agree with this? Do you understand this? Yes? Isn't it? ये आपने सीखा हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, आपके दिमाग में है ही. जैसे ही आपको 5 से डिवाइड करना है और वहां पे 5 से डिवाइड करना है, नंबर इज 10, तो आप क्या करोगे? यस, 5 2s are 10 एंड यू राइट दैट. ओके, अब इस केस में जब भी आप टेबल्स करते हैं तो आपने एक चीज नोट की है, जब आप टेबल्स जो करते हो और उसी को जब आप डिवीजन फॉर्म में लेते हो, तो आपने कभी नोटिस किया है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या होता है? यस चिल्ड्रन, आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन. जब हम टेबल्स वाले नंबर्स को डिवीजन फॉर्म में हैं, तब कभी आपने नोटिस किया कि उसमें रिमाइंडर क्या होता है? Would you answer that? For example, I'm saying 36 divide by 4. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? मैं क्वेश्चन क्या होगा? तो नेचुरली मुझे टेबल से पता है, yes, 4 9s are 36. So I go like 4 9s are 36. What is the remainder? 0, isn't it? So that means for every time when you take any tables form, the division is always 0. वो जो division में remainder आपका, sorry, not division is 0, the remainder is always. तो इसका मतलब ये होता है, ओके, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो आपको टर्म्स याद रखने हैं, ये सब आपको पता है, बट नाउ यहाँ पे एक नए तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. यस, यू गॉट इट, द रिमाइंडर इज 0. तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है, ओके, तो जो आपका डिवाइजर है, आप क्या कहेंगे? एक तो मैं ये कहूंगी 4 9s are 36, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो प्लस करेंगे. यू रिमेम्बर दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder, आप इस तरीके से लिखते थे ना. ओके, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 है, तो आपका डिविडेंड क्या हो गया? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज ये है, ओके, दूसरी चीज ये है कि ये जो 4 और 9 है, ओके, जो मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है, तो हम क्या कहेंगे इसको? स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कहेंगे?
36, please listen, 36 is exactly divisible by 4. Or I can say if I'm dividing with 9, you know what is 9? 4s are 36. Okay, so that means that 36 is exactly divisible by 9, मतलब vice versa. तो यहाँ से देख के ही आप कह सकते हो जब भी वो टेबल्स में आ रहा है तो डेफिनेटली रिमाइंडर आपको 0 होना ही है. ओके, ये याद रखना है, जब भी रिमाइंडर 0 है तो वो कहीं ना कहीं टेबल में आ रहा है, और या तो टेबल में आ रहा है तो आपका इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहेगा. और आई होप यू गॉट इट. तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एग्जैक्टली डिविजिबल. ओके, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पे है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मैम बहुत इजी सिखा रही है, यहाँ पे बहुत इजी चीजें डिस्कस कर रही है, बट ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा बिकॉज इसके बेस पे आपको लर्न करना है. आई डोंट वांट यू टू मिस आउट एनी टर्म, क्योंकि एक टर्म भी मिस हो जाती है तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, सो एग्जैक्टली डिविजिबल या तो हम कहेंगे एग्जैक्टली डिवाइड. ओके, तो जैसा कि मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में डालती हूँ, 4 exactly divides 36. ओके, या तो मैं कहूंगी 36 is exactly divisible by 4. Did you get the two statements? The same thing we can express it at two different ways. 4 exactly divides 36, or 9 exactly divides 36, or 36 is divisible by 4, or 36 is divisible by 9. I hope you got this. Okay, now तो अब इसका सबका क्या है? दूसरी चीज, जब डिवाइजर होता है, ओके, तो ये सारी चीजें याद रख लीजिए, ठीक है? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अदर कॉन्सेप्ट. ओके, ये सारी चीजें याद रखनी है. फाइन, अब हम अलग एक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं. ओके, ये जो डिवाइजर है उसी पर फोकस रखना है. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट डिवाइजर. यहाँ पे जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट एज डिवाइजर, ठीक है, बट ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली डिवाइजर की ही बात कर रहे हैं जो हमेशा रिमाइंडर 0 लेता है. तो इस डिवाइजर को हम कहेंगे फैक्टर. याद आया कुछ? आपने एक टॉपिक सीखा था लोअर क्लासेस में, फैक्टर. तो जब मैंने लिखा 4 9 36, तो ये 4 और 9 क्या है 36 के? याद आया आपको? आपने सीखा हुआ है ये भी फैक्टर. तो 4 और 9 क्या है 36 के? फैक्टर्स है. और 36 क्या है 4 और 9 का? मल्टीपल है. याद आया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? यस, यू हैव ऑलरेडी बीन डन इट. इफ नॉट प्लीज अंडरस्टैंड दिस. बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हम टेबल्स लिखते हैं, ओके, तो जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलता है, ओके, तो दो चीजें हैं यहाँ पे. दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और हमें कोई तीसरा आंसर मिला. तो 36 जो बड़ा नंबर है, जो हमारा आंसर है, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, मल्टीपल कहेंगे. और ये जो दो नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल. यस स्टूडेंट, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट. ओके, तो अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स. ओके, तो पहली चीज तो एक याद रखनी है आपको कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा नंबर जितने या नंबर से कम, मतलब छोटे होते हैं. लेट्स सी हाउ. Okay, and before going to that, I just want to clear one thing, and then we would be moving on to factors. आपने दूसरी चीज एक नंबर की 1 के बारे में पढ़ा. ओके, 1 इज अ स्पेशल नंबर, क्योंकि आप 1 का टेबल पढ़ोगे तो वो एंडलेस हो जाएगा, isn't it? 1 ones are 1, 1 twos are, what is it? 1 twos are 1 or 1 twos are 2? 2. 1 threes are 3. तो इस हिसाब से देखने जाए तो I can write 101, 115 का 50, और if I say 1 into 1076 is 1076. इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर को आप 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो एंड यू गेट दिस. ओके, यानी कि कोई भी नंबर का जब टेबल लिखना है तो मुझे 1 तो आना ही. इसका मतलब ये हुआ कि 1 है is a factor of every number. Okay, एक चीज याद रखेंगे, वेरी सिंपल सी, 1 is a factor of every number.
ठीक है, क्योंकि आप 1 का टेबल आप करोगे, ओके, समथिंग इज रॉन्ग, सो आप करोगे तो 1 हमेशा आएगा, तो 1 हमेशा फैक्टर होगा जब हम फैक्टर फाइंड करें। अब हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपकी टेबल्स आपको हेल्प करेंगे, यहाँ आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हाउ गुड यू आर विथ योर टेबल्स, फाइन। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए टेबल्स, तो जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, लेट्स स्टार्ट विद वन नंबर एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। से एग्जांपल 12, तो 12 कैसे लिखेंगे? Okay, so always थोड़ा सा हरी मत करना, I know you may be good with tables, so you will say 2 6 are 6 2 and 3 4 are. I will just take a minute for that. First, always I start with 1. Okay, so 1, how many are? So 1 12 are. Then I'll go with 2. Does 12 comes in 2's table? So yes, 2, how many are? 2 6 are. Okay, then next, does 3 is a factor of 12? Yes, we know that in 3's table 12 is there. So yes. So 3, how many are? 3 4s are. Okay, now next what? 4 3s are. Already it is there. Okay, then 6 are already just there. And 12 itself. It's already there. So what are the factors? So we could say factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. I hope this is clear. मुझे पता है ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? क्योंकि जब दूसरी दूसरी चीज ऐड हो जाती है ना, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में गड़बड़ मान लेते हो. सो आई एम रिपीटिंग दिस, सो आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, आई टेक वन मोर एग्जांपल क्विकली. से सपोज 30, तो 30 किस टेबल में आता है? तो हमेशा पहले 130 का. ओके, लेट्स गो विथ 2. ओके, 2 how many are? If you're good with tables, 2 15s are, or 15 2s are, you know that. Then 3 10s are. Is there any other number? After that, 4. No, it doesn't come in 4's table. 5 doesn't come in 5's table. Or yes, does it come? Yes, does it come in 5's table? Okay, so 5 6 are. Yes, so you get this as 5 6 are 30, and then further you move on. So you get all the factors in 1 2 3 5 6 10 15 and 30. तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमेशा जब आप फैक्टर्स की बातें करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद 1. बीच में कुछ भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट हमेशा जब हम फैक्टराइज करते हैं, मतलब जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, रादर जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो हमेशा उसका फर्स्ट फैक्टर होगा 1 और उसका हाईएस्ट फैक्टर, मतलब आप ऐसे देखने जाओगे तो उनके सारे फैक्टर्स निकालेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, फाइन. और ये हमेशा लिमिटेड होगा. इफ यू गो विद एनी बिगर नंबर आल्सो, ओके, then also you will get some limited number of factors. Okay, I didn't add here 6 5s because see 5 into 6, yeah, 6 into 5, so the one in the same thing कि 5 और 6 उसके factors है. So we don't need to go back again with 6 5s are, 10 3s are, 15 2s are. That's why I liked it here and write it like this, and you can understand from this what will I say. 1 and 30 are the factors. 2 and 15 are the factors. 3 and 10, I told you, no, both will be the factor. So we don't need to mention it again with 6 5s are and 15 2s are. I hope I'm very clear to you. Yes, children? So ये चीज एक समझनी है. So this is the one of the very simplest question you get it. Find the factors of a number. ठीक है? I think सबको समझ में आ गया. I just you want your thumbs up. Nothing much. Just say okay or yes or thumbs up. I will understand. Okay, everybody understood the concept how to find the factors of a number? Yes, everyone? Okay, so fine. अब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया. So just quickly one more thing. अब हम जाते हैं फिर से नंबर्स के पास. ओके, तो नंबर्स की जब बात करेंगे तो यू हैव लर्नड समथिंग लाइक दिस. आर यू familiar with this? Okay, so again if I divide the number, जैसे मैंने जो numbers है अपने 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे infinite numbers थे, right? तो उस number को हमने दो part में divide किया, even numbers and odd numbers, right? You all know that. Now I'm dividing all the number in two different groups. That is
प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कोई नंबर्स जो आपके 1 से लेके सारे जो नेचुरल नंबर्स है उसमें थोड़े नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, और जो थोड़े नंबर्स होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। तो कौन कौन से? सो लेट्स सी दैट which numbers are prime number and which numbers are composite numbers. Okay, तो सिंपल आपको याद रखना है what are prime numbers. तो प्राइम नंबर्स मतलब कि वो खुद के ही टेबल में आते हैं, मतलब कि उसके फैक्टर्स सिर्फ दो होंगे, या तो सिंपली याद रखना हो तो अ नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, मैंने सारे डेफिनेशन के ऑलरेडी बना दिए पीडीएफ फॉर्मेट, so I'll send you the notes by 3 or 4 o'clock once my classes gets over, so you can go through it and try the exercise of the textbook. Okay, so what are the prime numbers? Prime number is a number which has only two factors, सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर बनेगा। ओके, तो और ये दो फैक्टर कौन से होंगे वो भी हम बता सकते हैं। अ प्राइम नंबर is a number which has only two factors. One, मतलब एक उसका फैक्टर है 1 and second is the number itself. मतलब कि जैसे कि अब टू कौन से टेबल में आता है, तो आप कहोगे 1 2s are 2 या 2 1s are 2, राइट? तो उसके फैक्टर्स क्या हुए? When I write 2, it is 1 2s are. Is there any other way to write 2 is equal to something into something? No, isn't it? Not at all. So that's why we can say that 2 has only two factors, 1 and the number itself. ओके, तो ये 2 कौन सा वाला नंबर है आपका? प्राइम नंबर। उसी तरीके से 3, तो 3 कौन से टेबल में आता है? Isn't it? 3 कौन से टेबल में आएगा? 3 1s are 3. Okay, is there any other way to express 3 something into something? No, we don't have, and that's why we say 3 is a prime number. Let's go for 4. Now 4, it comes in 2's table. तो जैसे ही किसी और टेबल में आता है, सिंपली एज ए यस, दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ओके, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। हमेशा उनके पास दो से ज्यादा, मतलब द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कुछ ना कुछ ज्यादा होगा ही, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि वो दो नंबर्स के मतलब दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर से बना हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था एग्जांपल 12, so you know that 12 has so many factors, and naturally, and therefore we call 12 as a prime number or composite number. What is it? It is a composite number. I hope I'm very clear with it. तो उस तरीके से suppose, okay, we go with prime numbers. Which are the prime numbers? Generally question आता है कि list out the numbers between 1 to 99 या 50 to 99 या कोई भी 5 नंबर आपको बताने, तो किस तरीके से आप प्राइम नंबर को करेंगे? इट इज सिंपली कि वो किसी भी टेबल पे ना आना चाहिए। ओके, अब जैसे 100 है, 99 तक के नंबर्स है, तो 99 के नंबर्स है, इसमें मतलब कि एटलीस्ट 20 से आपको टेबल्स आने चाहिए। तो 20 तक आपको टेबल आता है तो आप 2 डिजिट में पता आपको चल जाएगा। ओके, कि भाई कौन से 99 तक आते हैं, एंड यू कैन डिस्कस इट। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट प्राइम नंबर्स। ओके, सो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अरे हमने 1 तो भूल गए, अब ये 1 का क्या था? ओके, तो 1 के फैक्टर्स बताएंगे आप? जनरली बच्चे 1 को प्राइम नंबर में डाल देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? 1 के फैक्टर्स क्या है? 1 कौन से टेबल में आता है? तो 1 का फैक्टर 1 टेबल में आता है 1 1 जा 1। तो कितने फैक्टर्स हुए? 1 1 जा 1, तो 1 1 मतलब 1 ही फैक्टर हो रहा है, isn't it? Doesn't get 2 factors. I hope you're getting it. 1 into 1, पर दोनों सेम ही है, मतलब अल्टीमेटली आप उसको एक ही फैक्टर कहोगे। I hope you're getting it. Okay, so एक ही फैक्टर हुआ, और जब एक ही फैक्टर हुआ मतलब प्राइम नंबर उसको नहीं कहेगा, बिकॉज प्राइम नंबर बनने के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स चाहिए, और कॉम्पोजिट नंबर बनने के पास आपसे 2 से ज्यादा चाहिए। तो ये जो 1 है बेचारा, ना वो प्राइम नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना वो कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई 1 is neither prime nor composite. ना वो प्राइम नंबर है, ना वो कॉम्पोजिट नंबर है। होप आई एम वेरी क्लियर टू। जनरली ये एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आता है, एंड चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड। आई होप यू रिमेंबर, आपको दिमाग में डाल देना, यस 1
नाइदर प्राइम मतलब ना प्राइम नंबर है ना वो कॉम्पोजिट नंबर है. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस, सो लेट्स गो विद इट. ओके, सो वन, ये स्पेशल है, ये ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. देन टू, ओके प्राइम नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गो विद प्राइम नंबर्स. टू, देन थ्री, फाइव हमने देख, फोर हमने देख लिया, नहीं है, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर. फाइव, then 6, you know it comes in 3 stable and 2 stable. Then 7, 7 ones are 7. 8, ओके. और यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ मैं. जो भी सारे इवन नंबर्स हैं, ओके, इवन नंबर और ऑड नंबर, अब फिर से हम वहां जा रहे हैं, ठीक है, इवन और ऑड पे जा रहे हैं. तो ये जो इवन नंबर्स हैं, ये मोस्टली 99% कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. 99 मैंने क्यों कहा, एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 is the only even prime number. आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, isn't it? और 2 इवन नंबर भी है. तो 2 एक अकेला ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है. बाकी सारे आप देखोगे 4, 6, 8, 12, 88, 96, जो भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा उसका 2 तो उनके 2 के टेबल में आएंगे. पर आपको पता है सारे डबलिंग हो गया ना, हाफ लेना हो गया, तो हमेशा इवन नंबर का एक फैक्टर हमेशा 2 होता ही होता है, isn't it? And hence we can say all even numbers are composite numbers except 2. Okay, so 2 is the only prime number. तो जब हम प्राइम नंबर्स 1 to 99 में से निकालेंगे तो एक चीज याद रखिए, इवन नंबर तो कभी उसमें नहीं फिट होंगे, क्योंकि इवन नंबर सारे कॉम्पोजिट नंबर में है. 2 से आगे जब हम जाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 8 इवन नंबर हटा दो. 9, ओके, इट इज इन tables, it comes in 3 stable, so again even nahi hoga ye. Then 10 even number, get it. Okay, 11, 11 comes in its table, so yes, it comes in itself. 11 ones are 11. आपको ये सारी चीजें अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करिए. ओके, 11 उसी तरीके से. 13, नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑड नंबर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इवन नंबर तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, वो सारे कॉम्पोजिट नंबर है. तो 13. अब 15 ऑड नंबर है, 15 को टेबल में आता है, तो हाँ, तो आपको याद है 5 के टेबल में, याद करिए 5 का टेबल. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20. याद आया, सारे 5 0 5, तो हम उसको हटाते जाएंगे. तो 15 हमारे जो है, 15 जो है ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो इस तरीके से वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर. बट अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, जैसे ना बड़े नंबर्स पूछूंगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसीलिए देयर आर सम स्टेटमेंट्स जो ट्रूली स्टेटमेंट्स है, राइट, उसको हम कहेंगे डिविजिबिलिटी, वो हम कल करेंगे. ओके, आई मीन टू से इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग दैट, व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट composite numbers and the factors of the numbers easily. Okay, so I hope today whatever we discussed it's clear to all of you. Okay, I told you about the division of even numbers and odd numbers. Then we discussed what is a multiple and a factor. Okay, what do you mean by multiple and what do you mean by factor? And then you understood the word divisor, exactly divisible and exactly divides. I hope that is clear to you. And then the prime number and composite number. Okay, so if you have the textbook good enough, you can go through the textbook and you can, match with the concept and learn the concept which I told you. You can just revise it, which will help you to learn it more. ओके, आई डोंट वांट टू हरीडली गो विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो एक चीज आपको समझनी है, आज जब मैं वर्कशीट भी भेजूंगी, मतलब जस्ट मोर ऑफ जस्ट एक्सप्लेनेशन, कोई होमवर्क नहीं है, बट आपको इस चीजों को समझना है, आपने इस चीजों को याद रखना है. ओके, और यहाँ पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ अटेंडेंस की, तो प्लीज 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 अटेंडेंस शीट भर लीजिएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म से आपकी अटेंडेंस भर लीजिएगा एंड राइट द आंसर प्रॉपर्ली. आप यदि ये लेसन आप लोग मुझे बाद में भी देखते हो, यदि आप रिपीट भी करते हो, ओके, तो प्लीज राइट डाउन देयर रिपीट लेसन करके आपके नाम के पास या कहीं पे भी लिख दीजिए रिपीट लेसन, आपके नाम के साथ लिख पाओगे और कहीं नहीं लिख पाओगे आप, तो वहां पे रिपीट देख सकते हो. जो बच्चे मुझे बाद में देखेंगे इवनिंग में या कल भी, जो वीडियो भी नहीं देख पाए, यदि आप लोग भी ये लेसन देख रहे हो, जब भी आप लेसन देखोगे तो उसके बाद आप अटेंडेंस शीट भर दीजिएगा,
शायद ऐसा हो कि आपने लाइव में अभी नहीं देख पाए बिकॉज देयर आर ओनली 31 चिल्ड्रन टुडे। ओके, तो यदि किसी ने बाद में भी लेट भी देखा हो तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट आप इसमें अटेंडेंस उस टाइम की लगाओगे, बट प्लीज फिल अप द अटेंडेंस बिकॉज हमें ये देना होता है। Okay, so thank you, children. I'm putting the attendance sheet here, like link here. So please go through it and put the attendance. Thank you very much.